हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो यही वीडियो रे मैं आप सहित हाईकोर्टर कंपोजिशन और फंक्शन उपर डिस्कसन करी। मुझे पूर्व मत सुप्रीम कोर्टर कंपोजिशन और फंक्शन उपर डिस्कसन कर सारी। जब आप देखी ना तो चैनल को जाए देखिपारे। आ वीडियो आगे को कहि आप यार पीडीएफ कि भाव डाउनलोड करेंगे। तो चलो डिस्कसन करवा। डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द हाईकोर्ट ऑफ इंडिया। तो हाईकोर्ट कौन देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स आर्टिकल 214 स्टेट्स there shall be a high court for high court for the state माने कौन आर्टिकल 214 कौन कहूँ देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर इच स्टेट माने प्रत्येक स्टेट रे गोटे हाई कोर्ट रहा व्यवस्था आर्टिकल 214 रही। तो कौन आउ कौन अच्छी आगे देखा हाउ एवर द पार्लियामेंट कैन बाय लॉज एस्टाब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स एंड ए यूनियन टेरिटरी माने कौन पार्लियामेंट गोटे एस्टाब्लिश करें जे कौन गोटे कॉमन हाई कोर्ट टू और मोर स्टेट्स को लेकिन यूनियन टेरिटरी एटी प्रेजेंट पंजाब एंड हरियाणा हाव कॉमन हाई कोर्ट माने कौन एटी प्रेजेंट रे पंजाब और हरियाणा गोटे कॉमन हाई कोर्ट अच्छी। Beside this, there has been each common high courts north eastern states कौन आसाम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। नेक्स्ट कौन देखा तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी ऑल्सो हाव ए कॉमन हाई कोर्ट तो ये सब जो कौन सब दुईटा स्टेट गोटे कॉमन हाई कोर्ट होती। कौन देखा इन ऑल आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया which are at work on the state level मतलब कौन इन इंडिया रे 25 टी हाई कोर्ट रही जहाँकि स्टेट लेवल रे कार्य कर। इन द जुडिशियल हाइट्री these are next in the judicial in the next only to the Supreme Court of India माने सुप्रीम कोर्ट इंडिया पर हाई कोर्ट होची सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया माने सुप्रीम कोर्ट तल भाग। देखिबा कौन जे कंपोजिशन ऑफ ए हाई कोर्ट कंपोजिशन कौन द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड सच अदर जस्टिस माने कौन हाई कोर्ट मध्य सुप्रीम कोर्ट भली गोटे चीफ जस्टिस रहती आउ किसी सच अदर जजेस मैंने रही था जजेस एज द प्रेजेंट ऑफ इंडिया मे डीम इज नेसेसरी फॉर द स्टेट्स द नंबर ऑफ जज वेरीज फ्रॉम 3 इन मैंने कौन 3टी जज रही था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड आ कौन देखा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द हेड जज फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सटेंडिंग 2 years सच जज आर अपॉइंटेड टू मीट द रूल्स ऑफ द वर्क इन हाई कोर्ट। आ कौन क्वालिफिकेशन फॉर ए जज फॉर हाई कोर्ट तो क्वालिफिकेशन कौन कौन रही गोटे हाई कोर्ट जज पे द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए जजेस इन हाई कोर्ट। तो क्वालिफिकेशन कौन कौन देखा फास्ट ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया माने से भारतीय नागरिक होइतिबे। ही मस्ट हैव हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलिस्ट 10 years ओल्ड माने कौन जुडिशियल ऑफिस रे अतः 10 वर्ष कार्य करथिबे। He must have been advocate of High Court or 2 more such courts in session for the last 10 years। 10 वर्ष भितर कौन गोटे हाई कोर्ट एडवोकेट होते कि लास्ट जो कोर्स अच्छी तार सेक्शन सब लास्ट ईयर से अटेंड करेंगे। आ कौन कौन अच्छी मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द माने देखा माने जजेस मैंने कौन मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट मेथडटा किपर भाव रोचे जे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन अपॉइंटिंग द जजेस एंड चीफ जस्टिस ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट मैंने कौन ऑन द बेसिक ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय द कॉलेजियम सिस्टम जज मैंने कौन जजेस मान अपॉइंटमेंट आगुरी कहते कॉलेजियम सिस्टम द्वारा जज मान अपॉइंटमेंट हुई प्रेसिडेंट कॉलेजियम सिस्टम रे जो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और अदर जजेस को अपॉइंटमेंट करती। देखा while appointing the chief justice the president consult the chief justice of India and the governor of the states while appointing of the judges माने कौन प्रेसिडेंट फास्ट चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट कला पुणी चीफ जस्टिस को एडवाइस क्रमे आउ गवर्नर को मध्य किछि माने कंसल्ट करके से अदर जजेस को अपॉइंट करती। नेक्स्ट टाइम देखिबा द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया of High Court concerned along with the Chief Justice of India and the Governor concerned the state. Next देखिबा however the recommendations are not binding upon the president. The senior most judges always promote of the chief justice ना senior justice में recommendation तो जेतो जाबी हो किंतु senior judges थांती से chief justice हो जाती। नेक्स्ट है टेन्यूर कौन रही every judges of high court including the chief justice hold office till he attains it 62 years माने कौन से 62 years मध्य से कार्य कर पारे कि कार्यकाल किसी फिक्स नहीं जो 62 years हो से रिन्यू करेंगे।
नेक्स्ट देखिए ए जज कैन बी ऑल्सो रिजाइन हिज सो डिजायर्स मैंने कौन से निज इच्छा मत रिजाइन करेंगे। नेक्स्ट देखिए मेथड ऑफ रिमूवल। तो बर्तमान आम देखा मेथड ऑफ रिमूवल तो सुप्रीम माने हाईकोर्टर जजेस मैंने किपर भाव रिमूवल होती मेथड से आम रिमूव कर डिस्कसन करवा। ए जज ऑफ ए स्टेट हाईकोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट on grounds of proven misbehavior on its capacity in which house of the parliament pass resolution मैंने कौन जे प्रेसिडेंट ताकू रिमूव करपारती किपर रिमूव करबे जेतबे जे देखिबे जे से जेतल बेले प्रमाणित होइछि तांकर कोन मिसबिहेव तांकर पावर को मिसबिहेव करछंती आउ इच हाउस पार्लियामेंट रिसोल्यूशन जदि पास हो जाए तेबे से रिमूव हेबे। नेक्स्ट देखिबा सच ए रिसोल्यूशन आज टू बी पास्ड बाय इच हाउस बाय मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स टू हेल्प मेंबर मेजॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट इन वोटिंग मैंने कौन जो उभय पार्लियामेंट रे उपस्थित 2/3 सदस्यों द्वारा जब रिसोल्यूशन पास हो जाए जे हाईकोर्ट जजेस मैंने जजेस कौन करेंगे ना रिमूव करेंगे ताहले से रिमूव हो जाती। द प्रोसेस ऑफ impeachment is regulated by the Judge Inquiry Act 1968। तापर देखिए सैलरी एंड अलाउंसेस। तो सैलरी और अलाउंसेस कौन आसो द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गेट्स ए सैलरी ऑफ 25 PM एंड एवरी अदर हाई कोर्ट जज 22,500 PM they are also entitled to order allowances and a pension of retirement मैंने कौन रिटायरमेंट से निजर पेंशन नहीं ताकि हाफ ने द सैलरीज एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपेक्ट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी मैंने कौन से तांकर सैलरी अलाउंस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग माने माने से इमरजेंसी सिचुएशन रे तांकर अलाउंसेसटा सैलरीटा रिड्यूस होई न थाए। नेक्स्ट देखा कौन जुडिस्केशन ऑफ हाईकोर्ट टू जुडिस्केशन माने पावर फंक्शंस को हम देखिबा। तो हाईकोर्ट हैज ए वाइड जुडिस्केशन ए लार्ज number of cases come under its jurisdiction. It has both original and applied jurisdiction। तो कौन ओरिजिनल जुडिस्केशन आप डिस्कसन करबा। द हाई कोर्ट्स ऑफ बॉम्बे कलकत्ता एंड मद्रास प्रोसेस ओरिजिनल जुडिस्केशन इन सिविल as well as criminal cases arising within the presidency powers। They are authorized to hear a civil case involving property of the value 20,000 or more मैंने कौन सब जो वैल्यू अच्छे प्रॉपर्टी को कौन 20,000 वैल्यू पड़े आउ हाई कोर्ट्स कौन बॉम्बे कलकत्ता मद्रास सब जो ओरिजिनल जुडिस्केशन सिविल आउ एज वेल एज क्रिमिनल केस अरेंज विथ दिस प्रेसिडेंसी टावर्स दे आर ऑथराइज्ड टू हर सिविल केस इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू। दिस इज एन एक्सक्लूसिव राइट्स एंजॉय बाय द दिस 3 हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट हम देखिए कौन जुडिस्केशन रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिस्केशन के रिगार्डिंग होची अंडर आर्टिकल 226 द हाई कोर्ट्स हैव बीन empowered to issue rights in order to enforce fundamental rights। The rights of habeas corpus mandamus certiorari and quo warranto can be issued by state high court for protecting the fundamental rights। तो कौन जिन फंडामेंटल राइट्स अच्छी प्रोटेक्ट कराया हम हाईकोर्ट में अपील कर कौन द 42 अमेंडमेंट एक्ट लुक अवे दिस अथॉरिटी बट 43 अमेंडमेंट अगेन रिस्टोर एक्ट। तो कौन देखिए नेक्स्ट each high court has original jurisdiction in case relating to divorce will admiralty and content of the court। नेक्स्ट टाइम देखिए appellate jurisdiction। The appellate jurisdiction of a high court extends to both civil and criminal cases। और कौन देखिए appellate jurisdiction on civil cases। तो civil cases कौन होगी in a civil case रे appeal to the high court lies from the decision of a district court। Appeal can also be made from the Supreme Court directly provided the dispute involves a value higher than 5,000 or a question of a fact or law। नेक्स्ट देखिए जुडिस्केशन इन क्रिमिनल। तो सिविल केस देखिए बर्तमान देखिए क्रिमिनल केसेस कौन कि जुडिस्केशन होची एंड अपील टू द हाई कोर्ट लाइज इन द केस ऑफ सेक्शन कोर्ट हैज अवेड इन द पनिशमेंट ऑफ 4 years or more। All cases including the capital punishment awarded by the section court came to high court or appeals। A death sentence awarded to be criminal by the section court can be carried out only if the high court upholds the decision। Any case involving an issue
of interpretations of the constitution can go to the high court as an appeal. नेक्स्ट टाइम देखिए कौन हाई कोर्ट as the court of record. तो हाई कोर्ट की कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की हाई कोर्ट्स लाइक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर ऑल्सो कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स. These have the powers to punish for the contempt by any person or institution. माने से कौन से पर्सन या इंस्टीट्यूशन कौन ये कौन पावर बा पनिश कर पारे तांगर से क्षमता अछि. The records of all its decisions are admitted to be evidently value and taken as judicial present and cannot be questioned when it's referred to the proceed before any court. Next देखिए कौन power and judicial review. तो judicial review की पावर like the Supreme Court of India माने सुप्रीम कोर्ट भरी each high court also enjoys the power of judicial review. माने प्रत्येक हाई कोर्ट judicial review पावर को कौन एंजॉय करती. It has the power to declare any law or ordinance otherwise if it is against the constitution of contravenes and any provisions of the constitutions. Next power to certification. In most of the cases decided by the High Court, the appeals can go to the Supreme Court when it is certified by the High Court. That such an appeal can be made, such as in most of the cases appeal to the Supreme Court depend upon the issues of certificate by the High Court. मैंने कौन हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देला पर से केसटा सुप्रीम कोर्ट को पळेबो. नेक्स्ट टाइम देखिए कौन एडमिनिस्ट्रेशन पावर. तो एडमिनिस्ट्रेशन पावर कौन अछि द हाई कोर्ट आल्सो एन्जॉय सर्टेन जुडिशियल administration powers within in territorial jurisdiction. Next देखिए कौन the high court has the power to supersede these courts for this. It is exercise the power to frame rules and regulation for securing the different working of a courts. Next कौन power अछि it can issue general rules regulating the practice and procedure of the sovereign court. माने जो हाई कोर्ट सॉवरेन जो माने सबऑर्डिनेट को जो कोर्ट जा रही ता पे कौन रूल और रेगुलेटिंग करती. नेक्स्ट देखिए कौन it can ask for the details of the proceeding the supreme court. माने सुप्रीम कोर्ट की तरह कौन प्रोसीडिंग सब करछि से माने कौन आक्स पचारि परिबो. तापर कौन रही it can transfer any case from one court to another court on one even transfer the case itself and deciding the समान कौन से गोटे केस को गोटे कोर्ट आउट कोर्ट को ट्रांसफर करबा डिसीजन मध्ये से डिसीजन नै परिबो. नेक्स्ट कौन अछि it has the power to investigate or inquire into the record or other connected document of any court subordinate to it. माने कौन जेति तो सबऑर्डिनेट कोर्ट अछि ताहा कौन करबे गोटे इन्वेस्टिगेटिव केस चलछि से केस ऊपर हाई कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन कर परिबो आ से रेकॉर्ड मध्ये से चेक कर परिबो आउ एनी कोर्ट को मध्ये से ट्रांसफर कर परिबो. तो ये हाई कोर्ट हम डिस्कसन कले कंपोजिशन और फंक्शंस गुड़ाक. तो थैंक यू टू ऑल ऑफ वाचिंग दिस वीडियो. आ यार पीडीएफ पे अपन टेलीग्राम लिंक जॉइन आंतु से आपको यार पीडीएफ मिल जिवो आ नोट्स शेयर करूँ जहाँद्वारा कि समस्त नोट्स पहुँच पारे समस्त पाठ पढ़ाई साहाय्य।